हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बस वी विल स्टार्टिंग द मीटिंग सून. जगदीश जी, यू देयर? हाय सदफ, आकाश दिस साइड. अभी जगदीश ज्वाइन कर रहा है, बस विद इन 2 मिनट्स. ओके ओके, श्योर. तो जो लोग नए आ रहे हैं, हेलो एवरीवन. और आज की हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है, आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल. जितने भी लोग ब्रिकेट को पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज हम एक तरह से वर्चुअल टूर जितना हो पाएगा वो कराने वाले हैं. और जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि गोवा के प्रोजेक्ट में ही रहते हैं. सो यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट इट, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ज्वाइन सून. Akash, let me know as soon as Jagdish ji joins. श्योर. अभी बस वो प्रोजेक्ट पे पहुंच गए हैं सदफ. विद इन नॉट मोर देन 1 मिनट नाउ. Okay. राइट. ओके. We will be starting soon in a minute or two. जगदीश जी बस प्रोजेक्ट पे पहुंच रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल सेशन दोज हु आर फोकसिंग ऑन ब्रिकेट. मैम, जब तक वो आते हैं तो ब्रिकेट के लिए कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह मिलेगा क्या, बिना ब्रिकेट लिखा हुआ? बिना ब्रिकेट लिखा हुआ? हाँ, जब हम अपना ऐड डालेंगे इधर उधर तो हम ब्रिकेट बता देंगे तो क्लाइंट तो डायरेक्ट चला जाएगा उधर से. उसको फाइनल डाउन करना है तो हमें भी कुछ उसके लिए मटेरियल उनके कंपनी का नाम के बिना चाहिए. तो जैसे आपने एक वीडियो दिया है, आपने एक फोटो दिया है, पर हर चीज में तो ब्रिकेट लिखा हुआ है आपका. अच्छा मैम, बेसिकली आप चाहते हो कि ब्रिकेट का नाम ना हो उसमें? The client should call me. So if I put Brikiit, then they'll call Google Brikiit and go on Brikiit direct, right? Yes, I तो understood. वो ना हो, उसके लिए अगर मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो उनका जो कुछ मटेरियल मिलेगा तो वो अच्छा रहेगा. और दूसरा ये भी पूछना था कि EXP में ब्रिकेट लोड करना है क्या हमें, अगर हम ब्रिकेट के साथ काम कर रहे हैं तो? यस यस. तो उसके लिए भी तो कुछ फोटो वोटो नहीं चाहिए होगा क्या?
Basically, most of the photos and the videos I have shared, and I'll get back to team और आकाश हमारे साथ हैं जो हमको help कर रहे हैं, and I'll get back कि कौन सी किस तरह की photo resolution and everything मैं आपको उसको share कर दूंगी जो बहुत ये मेहरबानी होगी। आपको। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। So Sadaf, in that context, actually Swati ji looks for the entire, marketing material, development, creatives, graphic designing, everything. So I'll just connect her with you so that अगर अपना team का ना EXP की team का if they have any kind of requirement like that, जैसा अभी मोनिका जी बोल रहे थे कि they need something without Brikiit's logo, so we can do that. Cumulatively, क्योंकि अगर Brikiit का logo भी नहीं है ना, तो if in India anyone wants to buy fractional property, fractional ownership on any kind of holiday home, तो ultimately वो Brikiit के पास ही आएगा. Sure. Right. So if anyone have that fear of loss, maybe it can. तो हम कर सकते हैं ऐसा. I'll connect you with Mrs. Swati. So she will help you out for any kind of creatives. अगर कुछ ऐसा है कि with collaboration with Brikiit and EXP, you want some marketing material, तो वो भी manage हो जाएगा. Because that will be really helpful as it will be attractive as well as like हमारा collaboration भी पता चल जाएगा. तो आप मुझे आकाश नंबर शेयर कर देना, मैं कल ही उनसे कोऑर्डिनेट करके एंड जो भी नीड्स होंगी हमारी टीम की उनको बता दूंगी ताकि वो हमें वो इस तरह के क्रिएटिव्स पहुंचा दें. Surely अभी जब भी मैं एग्जिट करूंगा तो I'll share her number on your WhatsApp also, और मैं उनको भी एक बार अपडेट कर दूंगा with your number. Okay, sure. So जैसे ही जगदीश जी प्रोजेक्ट पे पहुंचते हैं we will start and I request जितने भी क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे आपके जो डाउट्स हैं वो लास्ट 15 मिनट्स में हम डिस्कस कर लेंगे. आज जगदीश जी हैं वो आपको आंसर दे देंगे उसके अकॉर्डिंग. हाँ सदफ, अभी ये जगदीश जी का कॉल आया था. एक्चुअली ना गोवा में क्या है, गोवा में वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ मोबाइल टावर्स, तो प्रोजेक्ट्स पे भी ना नेटवर्क का इशू रहता है, तो ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट. मैंने उसको भी बोला एक बार फ्लाइट मोड पे फोन डाल के वापस चालू करेगा तो प्रोबेबली ही कैन गेट सम गुड सिग्नल्स. गोवंस का क्या है ना, गोवंस डू नॉट वांट मोर मोबाइल टावर्स इन देयर स्टेट. ओके, तो वहाँ है नेटवर्क का इशू हमेशा रहता है. एनी हाउ ही इज जस्ट ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड. जैसे ही होते हैं तो वी स्टार्टेड, राइट? Okay. So I request everyone to be patient for a little while and we will start soon. So Jagdish, are you there now? Yes, I can see Jagdish. Jagdish, please reply. Yes, please. Can you hear me? Yes, we can hear Yes. you. Okay, right. Great. Hello, Jagdish. Sorry for the inconvenience that it took me a little bit of time to join in the meeting. Okay, so we can begin, Jagdish. Yes, please. Okay, so over to you, and I would request everyone, Mr. Jagdish will be helping us for a virtual tour. और आप इनसे जो भी क्वायरीज हो आपके लोकेशन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में आप इनसे जान सकते हैं. ओके, जगदीश, ओवर टू यू. Hello, good evening, everyone. So my name is Jagdish, and I'm project head for Brikiit in Goa. So I'm taking care of the hospitality part out here, as well as if
our Brikiit community members when they are coming here. So I take care of them. So first of all, I'll just show you the construction work which is happening at the moment. So I'll just change my camera. So so as you can see, this is a construction which is happening at the moment out here. So the project is almost 70% completed, and as you guys know that it is the company is Provident, and the project name is Adora di Goa. So recently they have launched their new phase, which is Aroha di Goa. And if we talk about the location, so this area is called Dabolim, and it is very much reachable to Goa airport, and the distance is between 4 to 5 kilometers, and it takes hardly 10 minutes to reach up to the uh, airport. And so and if you talk about this location, so the nearest beaches, as anyone who comes to Goa, for them the main attraction is beach. So the nearest beach is Bagmolo Beach, which is again a distance of 10 minutes from here. And location wise, if you say that this location, Dabolim is the center point for Goa, it connects both uh, South Goa and North Goa. And from here, if you want to go to Panjim or to Kalangud, Kandolim, so these areas are, it takes around 35 minutes to reach up to the Kandolim area. And if you talk about southern part of Goa, if you want to go to South Goa, so it takes for the like majority famous beaches are Kolwa and Banalim and Majroda. So it is in the distance of 20 to 25 minutes. So if is there anything else that you people want to know, please let me know so that I can elaborate on that. Hello. सर इसमें कितने कितने फ्लैट्स हैं और कितना मतलब ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके डिटेल्स उस वीडियो वगैरह में है कि आपसे मिलेगा? I'm not sure about this point. So I'll give you the details. So this whole project is of 32 acres, and it has got 30 plus amenities. So the main attraction of this project is it's a resort theme based project. So it is, you can see when you see the project photo. So it is in like half sun is there, and then there the rays, rays from the sun which goes. So the construction is in the same manner. Has got a total inventory of 1900 flats in the denomination of 1 BHK, 2 BHK, and 3 BHK. And in 3 BHK, they have large and extra large houses out here. So basically, this project is divided into 4. So East Point residences, which are the rooms which are facing east direction, and then the West Point, and then they have Aroha di Goa, and then they have the Lebanese residences. So the in the project, it has been divided into 4 different sections. And apart from that, the main attraction is a nearly 1 acre of water activity area. So for the people who are coming to have fun with their family, so they'll get everything in the project itself. So I'll just show you once if you can see. So this place where I'm standing right now, so there is this is the main entrance area, and this is the main entrance. And from here, if you just walk for 20 steps or 30 steps, you will find the blue area, so which is the main attraction of this project. So it is nearly 1 acre of land which has got amenities like jacuzzi is there, children's swimming pool, a main pool, slow river, and it has got a sunken bar, it has got a sunken gym, so people can do snorkeling also. So it's a one-stop destination for the families. As well as if we go little on the eastern side, so they have got a shopping complex which will be coming up. So it has got all the restaurants, some grocery stores. So they don't have to go anywhere else from the from the project itself. And they have a development of 5-star hotel within the project. So people who want to take the facilities of 5-star services, it will be there.
So the company has made a arrangement with the park hotels and residences that in some of their flats, so which is the flats which are facing the blue area, and so the park hotel will be providing their services from the hotel to the rooms is also. And if we talk about other amenities, so they have kept tandem bicycles, so people can then ride them within the project itself. And then they have amphitheater also, so where people can go and sit, and then they can have a facility of a Bluetooth cinema hall. Apart from that, like there are rooms which will not get the view of the Jacinto Island. So for that, what they have done, they have made 3 watchtowers. So people who wish to sit and they want to have a view of sunset, so they can come to these watchtowers and then they can enjoy the view of the Jacinto Island. सर इसमें रिटर्न कितना आता है, मतलब कोई क्लाइंट डालेगा पैसा तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा? Sir, if we talk about returns, so returns through our model, so there are 2 types of return that people get. One is the rental income, the rental returns which you get, and another one is the capital appreciation. So if we talk about this particular area itself, so this is the next area which is developing very rapidly. Earlier the parts were North Goa. If you say the North Goa and South Goa are highly commercialized, and at this area only the property prices are in the range of between 7,000 to 11,000 square feet of area. And if we see last 1 year, so the property prices are increasing by the rate of 12%. So that is a capital appreciation people can think of that they will get on their. And once the project will be completed, again the prices will be people will get better returns on that. रेंटल इनकम क्या एक्सपेक्ट करके चल सकता है परसेंट? The rental income what we are expecting is at 8%, and again once the project will be done, it can go upward also, so it can go up to 8% will again it will be divided into 11. Yes sir, so the rental is dependent totally on the unused nights. So our model works in our main concept is for holiday home, so the other component which comes is the rental income only. So people, if they have not used nights, then in that case they will get the rental returns on that. If they have consumed their nights, then there will be rental return will not be there. तो मतलब वो 1 महीना जो नहीं जाएगा बस उसी का उसको रेंटल मिलेगा, राइट? हाँ जी सर. बाकी 11 महीना उसको कुछ नहीं मिलना है. हाँ सर. How much rental you expect here per night? So what we are expecting at around, sir, if we see the rates which goes in, we are expecting around 4,000 on average per day rentals for a 1 BHK project, 1 BHK room, and for a 2 BHK apartment, we are expecting around 5,000 on an average. So if somebody is using project for 10 days and giving rent on 20 days, so he'll make approximately 80,000 or 1 lakh rupees over that. Yes, sir. Okay. However, Anuragji, what happens? The entire rental earning is, directly proportionate to the brick owner's unused day numbers. कोई भी brick owner जितना कम दिन use करेगा ना, तो probability of getting rentals will be more higher. And if we are expecting कि मेरा brick owner 15 दिन 20 दिन property को use कर रहा है, तो then ultimately rental earning will be decreased, because अभी 10 दिन मेरे को अगर 10 दिन खाली मिलेगा property, तो it depends. So everything is directly proportionate to the unused day numbers of any brick owner. This is little bit complicated, but that's okay. We will understand later on. Rental will come, that is more important. Sure. Bilkul, sir. Sir, how many units are sold already? हेलो जगदीश सर. Yes, sir. राजेश बोल रहा हूँ मैं सर. जैसे आपने बताया 32 एकड़ का है, रिसोर्ट है, ये सब चीजें, जैसे इसमें 1 BHK 2 BHK 3 BHK है, उनके कारपेट एरिया क्या होंगे, प्राइसिंग क्या है, टोटल टावर कितने होंगे, टोटल फ्लोर एंड एक फ्लोर पे फ्लैट कितने होंगे, और इसमें मिक्सअप है एक ही फ्लोर पे 1 2 3 या सेपरेट है उनके? सर जो
सो ग्राउंड प्लस 5 का स्ट्रक्चर है पूरा प्रोजेक्ट। ओनली जो कमर्शियल टावर है वो ग्राउंड प्लस, बिकॉज उसमें 2 फ्लोर कॉम्प्लेक्स है उसमें, तो G+7 होता है। रेस्ट पूरा प्रोजेक्ट ग्राउंड प्लस 5 का है। ओके। और जैसे कि आप 1 BHK 2 BHK 3 BHK बोल रहे हैं कि वो सारे स्कैटर्ड्स हैं, तो हर फ्लोर में आपको 2 BHK और जो 3 BHK हैं बेसिकली सारे 3 BHK फेसिंग टुवर्ड्स द आइलैंड है, जो कि मतलब आपका सर ये सेपरेट रखा हुआ है कि अलग अलग ही है? मतलब अगर जैसे एक टावर है उसमें आपका 1 BHK भी है, 2 BHK भी है और 3 BHK के, इसमें 1 वाले में 1 ही है सिर्फ? नहीं सर, ऐसा नहीं है, स्कैटर्ड है, उसमें मिक्स है, 2 BHK भी Mix है, है, 3 okay. BHK भी है। मोस्टली जो 3 BHK है, मैं आपको बताता हूँ इसीलिए कि जो मोस्टली 3 BHK हैं वो आपका जैसिंतो आइलैंड, अगर आपने पिक्चर देखा होगा उसका, तो अभी हम लोग जैसे नॉर्थ साइड में पड़ता है, तो आपको उस नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में आपका जो आइलैंड का व्यू है उस तरफ है 3 BHK। और जो ब्लू एरिया है, ब्लू एरिया को जो फेसिंग कर रहे हैं उसमें 1 BHK और 2 और 3 BHK के फ्लैट्स हैं। टोटली इफ यू कैन से इट्स अ स्कैटर्ड इन्वेंट्री। ऐसा नहीं कि एक ही फ्लोर पे आपको एक ही रो बनाया है, और इसमें टोटल 18 रो है प्रोजेक्ट में। टोटल 18 फ्लोर है? ओके। नहीं 18 फ्लोर नहीं सर, 18 रोज हैं। ओके ओके। 18 रोज हैं टोटल। और जो जगदीश, स्ट्रक्चर वो G+5 का है। Jagdish, हाँ जी। how many flats sold already? So there are 1250 flats been sold, sir. So now pending is? Pending is around 600. Okay, thank you. So तो there ये are कब खुलेगा, कब चालू हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट क्या टारगेट है? फर्स्ट फेज है वो आपका नेक्स्ट इस ईयर सितंबर 23 में है, सॉरी दिस ईयर ओपन होना है आपका फर्स्ट फेज, जो कि ब्लू एरिया है और आपका रो 18 है। उसके अलावा इसका नेक्स्ट होगा वो 23 में होगा, जो लास्ट फेज है वो दिसंबर 24 में ओपन होना है। और जो पहले बुक करेगा उसको पहले भी लेगा क्या? यस सर। सर इसका पोजीशन ईयर क्या बताया आपने? हाँ जी सर, पोजीशन ईयर? पोजीशन ईयर सर तीन डेट्स हैं। आपका जो फर्स्ट फेज है वो 22 में है, अक्टूबर 22। नेक्स्ट है आपका सितंबर 23 एंड देन उसके नेक्स्ट है दिसंबर 24। ओके सर। प्राइस एंड पेमेंट प्लान? Sorry sir, if you can just repeat it again. Sir, price and payment plan? So Mr. Akash. Yeah, Jabi. If we are talking about the brick module, so the brick now what we are offering here is 2 BHK at Aroha de Goa. The brick value is 7,91,000 and the payment plan is till December 2024. तो इसमें सर अभी ये स्लैब वाइज तो पेमेंट है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, राइट? तो वो पेमेंट 5% 10% के बाद पूरा बाय लोन लेना है, कैसे है? Okay, so Rajesh ji, see what happens. Brikiit's entire payment plan is ultimately, related to the builder's payment plan. तो we can share you accordingly, क्योंकि with time जैसा जैसा भी टाइम बीतेगा ना, like 2 महीने के बाद में पेमेंट प्लान 2 महीना छोटा हो जाएगा। तो what we will do once we start the month, we will be sharing you the entire payment plan according to the builder's requirement. आपने बिल्कुल ठीक बोला, इनिशियल जो पहला दूसरा पेमेंट रहता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बट अगर हम देखेंगे टोटल 7,91,000 रुपीज जो है ना, दैट इज स्प्लिटेड अकॉर्डिंग टू दी बिल्डर्स पेमेंट प्लान। अभी क्या है, फॉर एग्जांपल बिल्डर ने पहला डिमांड किया 44 लाख, लेकिन हमारे मॉड्यूल में हर कॉस्ट डिवाइड होता है 11 फ्रैक्शंस में, तो यानी कि हर ओनर को देना पड़ेगा 4-4 लाख रुपया। तो दैट वी कैन शेयर यू अकॉर्डिंगली, जैसा जैसा अपना पेमेंट आता। तो सर एक आपका पेमेंट शीट जो रहता है, पेमेंट प्लान, वो आप एक बार शेयर कर सकते हैं क्या उसका स्क्रीन? मतलब ये पेमेंट प्लान का जो शीट होगा वो शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे हमारे? यस सर, डेफिनेटली। मैं सदफ, क्योंकि सदफ एक ऐसा हम दोनों टीम्स के लिए कॉमन पॉइंट है ना, तो मैं सदफ को शेयर कर दूंगा एंड शी कैन शेयर विद ईच एंड।
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर उसके लिए। अच्छा, इसमें सर ये जो रेंटल इनकम आएगा तो वो अनयूज्ड में से आएगा। तो अनयूज्ड मान लीजिए मुझे आपने कोई पर्टिकुलर मंथ डेडिकेट किया कि भाई आपका जैन मंथ है, तो जैन मंथ में हो सकता है शायद फ्लो लोगों का कम हो फॉर एग्जांपल, तो उस महीने, हाँ, तो उसमें जस्टिफाई कैसे होगा कि भाई मतलब मुझे मतलब जो सीजन महीना है वो मुझे मिला नहीं, जो नॉन सीजन महीना मुझे मिला, अब उस महीने में तो लोग ज्यादा आएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आई विल नॉट एबल टू मेक दैट मच मनी व्हाट अदर काउंटर पार्ट ऑफ माई, आई मीन द मेंबर, अदर मेंबर विल बी मेकिंग। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, जैसे कि आप 11 ब्रिक ओनर्स हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं तो आप सब चाहेंगे उसमें इक्विटेबल यूज मिले सबको, राइट? तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो ये 11 जो मंथ हैं वो फिक्स मंथ नहीं होते हैं। जो 30 नाइट्स हैं, दीज आर नॉट फिक्स्ड, ओके ओके, दीज आर स्कैटर्ड। तो जो हर ब्रिक ओनर एट अ टाइम 7 डेज का बुकिंग कर सकते हैं एक स्ट्रेच में। कैन यू हियर मी? ये तो वो 7 डेज का आप बुकिंग कर सकते हैं, और जो बुकिंग विंडो होता है वो 1 ईयर इन एडवांस में ओपन होता है। तो आपके पास एम्पल टाइम होता है कि डिसाइड करने के लिए। अब इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि हम जनवरी के महीने में आएंगे या फिर दिसंबर में, न्यू ईयर में, क्रिसमस में ही आएंगे। तो उस केस में क्या होता है, हमारा स्मार्ट सिस्टम है, बुकिंग सिस्टम, वो आपको वर्क करता है इन द मैनर कि वो 11 स्पेशल वीक बनाता है, वो फेस्टिविटीज एंड लॉन्ग वीकेंड्स पे होते हैं, और हर ब्रिक ओनर को एटलीस्ट एक वीकेंड मिलता है। और जैसे कि बुकिंग विंडो 1 साल पहले से ओपन होता है, तो जो स्पेशल डेट्स होती हैं लोगों की फॉर एनिवर्सरी, बर्थडे, तो वो स्पेशल डेट्स आप पहले से बुक करके रख सकते हो, ये बेनिफिट मिलता है। अब सर जैसे कि इक्विटेबल यूज है और डेट्स स्कैटर्ड है, तो इन द सेम मैनर रेंटल पार्ट भी इसी मैनर में काम करता है कि हम पूरे साल का एवरेज निकालते हैं, और उस एवरेज के हिसाब से जिसकी जितनी अनयूज नाइट होती हैं ओनर की, उसके हिसाब से उनको रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल, आप इंश्योर करोगे कि सबको प्रोपोर्शनेट रेशियो में रेंटल इनकम गई है? हाँ जी सर, बिकॉज अगर आपने 25 नाइट्स यूज कर ली अपनी, तो आपकी जो रेंटल इनकम मिलेगी वो आपको 5 ही डेज की मिलेगी। और हम क्योंकि आपके मंथ्स तो फिक्स नहीं है, राइट? अगर आपके मंथ्स फिक्स नहीं, तो उसको एक प्रोपोर्शनल रेट निकालना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसका जो भी इनकम आएगा तो मुझे फिर सीधा साल में एक ही बार वो मतलब एक ही महीने में सबको आएगा, फिर एक ही साथ आएगा कि हर महीने तो महीने उसमें क्या आता होता है, रहेगा? बिकॉज आपकी जो ओनरशिप होती है इसमें, वो आपकी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स होती है, और शेयर्स में आपको जो इनकम मिलता है वो एज अ डिविडेंड मिलता है, राइट? करेक्ट। और जो हमारा वेब ऐप है, ऐप के थ्रू आप डैशबोर्ड से कनेक्टेड होते हो, और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि आपको उसकी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मिलती है, आपको ये पता चलता है कौन सी नाइट्स अवेलेबल है, कौन सी बुक्ड है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको वेब ऐप के थ्रू मिलता है। और आपको बैलेंस शीट भी दिखती है कंपनी की, मतलब प्रॉपर्टी की, इन द सेंस कि उसमें क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या क्या एक्सपेंसेस है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है वेब ऐप के थ्रू। तो इसमें ऐसा नहीं कि मतलब जो भी रेंटल इनकम है वो सबको पता चलेगा कि हाँ कितना रेंट जनरेट हो रहा है, क्या क्या एक्सपेंसेस है, वो सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो ट्रांसपेरेंसी रहती है इसमें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल था। हाँ जी सर। सर एक ही ब्रिक में 11 लोगों का है क्या? नहीं सर, सर कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि आपने एक अपार्टमेंट है हमारा 2 BHK का, और उसमें 11 ब्रिक ओनर हैं, तो हर फ्रैक्शन को हम लोग ब्रिक कहते हैं, और आप कह सकते हैं कि एक पार्टी के शेयर को हम ब्रिक कहते हैं। तो हर प्रॉपर्टी में 11 ब्रिक ओनर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 11 शेयर होल्डर होते हैं। तो फिर उसमें 11 मंथ का तो उनको रेंटल इनकम आना चाहिए ना फिर सर? वो तो एक मंथ ही यूज कर रहे हैं ना वो। नहीं तो हर ओनर के पास 30 नाइट्स होते हैं ना, तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है हॉलीडे होम, सो पीपल उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने 30 नाइट्स अपने पूरे यूज कर लिए, तो आपको उसमें रेंटल नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने यूज नहीं किए और वो रेंट आउट हुआ, तो आपको उस पर रिटर्न आएंगे। ओके, ठीक। Sir, हाँ जी। there any model houses are there like 1 BHK, 2 BHK?
they made Sir, or they not? don't have the model houses because जो अभी इन्होंने बनाया है टेक्निकल मॉडल बनाया है कंपनी ने। Okay. तो उस टेक्निकल मॉडल में उन्होंने एक साथ ही पूरा 3 BHK तक का पूरा कंस्ट्रक्शन करके दिखाया एंड देन उसी में वो आपको डिफरेंशिएट करके बताते हैं जब यहाँ पे जैसे कि कोई आता है देखने के लिए साइट विजिट के लिए, तो उसी में वो डिफरेंशिएट करके बताते हैं। उसका मेन रीजन ये है बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन है वो L&T कंपनी कर रही है एंड देन दे डोंट अलाउड एनीवन गो इनसाइड द प्रोजेक्ट। जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो वहाँ पे किसी को एंट्री नहीं मिलती, इवन उनके खुद के एम्प्लॉयज को भी एंट्री नहीं मिलती है, इसलिए उन्होंने एक टेक्निकल बनाया हुआ है। आई बिलीव आफ्टर 3 to 4 months दे विल श्योरली मेक अ मॉडल रूम, और आप बोल सकते हैं कि एक रूम बनाना ही पड़ेगा उनको, बिकॉज अगर वो औरों को कैसे दिखाएंगे, पता कि नहीं चलेगा। Yeah, correct. तो अभी And के लिए उनके rental- पास टेक्निकल मॉडल है, और अभी वो ऑफिस बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। अभी Okay. अभी वो ऑफिस बंद हो गया है। And rental and all maintained by Brick only? यस सर, हम क्या करते हैं, हम उसको 140 चैनल पार्टनर्स में लिस्ट करते हैं Okay. अपने सिस्टम के थ्रू। तो हमारी लिस्टिंग हर जगह होती है, तो वहां से हमको बुकिंग्स मिलते हैं। उसके अलावा सर उसमें दूसरे मॉडल्स भी हैं। हम ब्रिक उसके अलावा हम किसी कंपनीज के HR से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एरिया है ये एयरपोर्ट के पास है, तो इसमें हम लोग टारगेट कर सकते हैं आपका एविएशन को। इसके अलावा यहाँ पे आप नेवल बेस है, तो नेवल बेस को भी हम टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज उनकी भी ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए वो लोग यहीं पे आते हैं। तो इन सब चीजों को भी हम लोग टारगेट करके रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर। इसका कोई वर्चुअल 3D मॉडल वगैरह बना होगा ना फ्लैट का? यस मैम, वही बनाया। हाँ, तो वो आई थिंक अमित सर दे देंगे, ठीक है। हाँ, राइट नाउ आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑफिस क्लोज हो गया है, 6 o'clock बंद हो जाता है। So Goa is known to is a like happening place. So people after 6 o'clock they go for their enjoyment and everything. That's why अभी वो क्लोज हो गया। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कल I can take a picture and then I can share it with Akash ji and then you all people can get it. यस यस, दैट विल बी वेरी नाइस। आप भेज दीजिएगा थोड़े फोटोज, उसके 3D वगैरह भी अमित जी को भेज दीजिएगा। Right. And a few days back actually I took a picture from like 8th 9th floor. So I will ask Mr. Akash to share it with Ms. Sadaf, so you people can have an idea of how the construction happening. So it is in daylight, so you'll get better idea on that also. जगदीश जी, ये रेंटल इनकम जो है मैक्सिमम हाउ मच वन कैन एक्सपेक्ट ईच शेयर होल्डर? That is you said in case he doesn't use at all, so he can have maximum rental income of 1 month, right? If he uses for Yes, 1 week, so he can expect maximum rental income of his share of the remaining 3 weeks. So that's the only rental income he's going to earn, not from any other unused portion, right? Yes sir, because see your entitlement is only for the 30 nights. So आपको जो भी रिटर्न आएगा उसमें that is for only those 30 nights. अब उसमें ये भी होता है सर, because see this is very organic in nature. So like I am from hospitality from past 3 years. I'm working in Goa. So I would say in that part. So my last assignment was with Golden Tulip Hotels. So I can say that जो गोवा का ट्रेंड है वो ऐसा है कि people think कि आपका there is a season which is going on like from October to Feb and उसके बाद लीन सीजन शुरू हो जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। प्रॉपर्टी जो रेंटल रेट्स होते हैं उसमें डिफरेंस आता है, बट ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट ऐसा ही मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% थ्रू आउट द ईयर रहता है। तो उस तरीके से आपको रेंटल रिटर्न्स मिलते हैं इसमें। और सर ये बिकॉज पूरा ऑर्गेनिक है ये, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी हम करंटली बात कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ कोरोना, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कुछ और थर्ड वेव तो आ चुके, अगर फोर्थ वेव या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, तो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस होते हैं जो मार्केट सेंटीमेंट्स होते हैं, उस पर रेंटल रिटर्न का इफेक्ट पड़ सकता है उसमें। दैट इज द ओनली थिंग जो इफेक्ट पड़ेगा। रेस्ट इट इज नियर बाई एयरपोर्ट। सबसे अच्छा जो इसका लोकेशन का बेनिफिट है वो नियर बाई एयरपोर्ट है। एंड जो भी फर्स्ट टाइम गोवा में लोग आते हैं दे यूजुअली विजिट नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा बोथ। अब अगर आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा विजिट करने जाओगे तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1.5 hour। अगर आप कांदोलिम एरिया से आते हो और आपको साउथ में जाना है कोलवा बीच में या बेंगलिम बीच में, तो इट विल टेक दिस मच ऑफ टाइम। सो what people they do, they 2 days they stay in South Goa,
2 days they stay in North Goa. That is a general trend, and usually length of a stay is 4 days in Goa, which is maintained by people. So mostly they come for 4 days. So वो 2 nights they spend in South Goa, because South Goa के जो beaches हैं, they are more pristine, more beautiful, more clean. और जो North Goa के beaches हैं, they are highly populated. थोड़ा सा cleaning का issue आता है because they are highly populated. तो ये चीजें हैं, ये चीजें factor करती हैं इसमें. So I wanted to also understand, in case is there any waiting period? Supposing if the shareholder wants to dispose of his share, so will there be any lock-in period or some waiting period? Or what? Lock-in period for selling of your share? Share, yeah. Mr. Akash, are you there? Yes. So we do not have, as of now, any kind of lock-in period. However, whatever is the payment plan for the entire brick ownership, that is the only lock-in period, because once the brick owner haven't paid the entire amount of that brick ownership, so until then he will be, restricted to sell his shareholding. Yeah, that's true. Once That's true. Yeah. Right, and the day we get the possession of the property means we already have paid the entire value of the unit to the builder. The very next day, any brick owner wants to exit, he can sell his brick. No lock-in period then. That's what I'm trying to say. In case the person has paid, the shareholder has paid his entire share, I mean his liability, he can, if he wants to dispose of, he can dispose of his share also, right? Yes, anytime. Now, supposing if the other 10 shareholders have not completed their payment plan, so what happens? Does it have any bearing on the other person, the first person who wants to dispose of? Yes, it is there. See what happens now when one individual pays, the entire amount to the builder, and if he delays any kind of payments, so builder will put some penalties on it, right? Same is with us. What if, like 11 people are paying it cumulatively? If 10 people have paid, 11 have not paid his amount, so obviously that payable amount will be a bit short, right? Then that penalty will be applicable. However, what we do, for example, builder will be having his demand in the month of April. So what we do, we take all the payments in the month of March only from the brick owner, so that if anyone is having a problem, so we will be having approximately 15 to 25 days as a grace period for that payment, or that pending payment. So we make sure ऐसा नहीं हो. But however, अगर ऐसा होता है तो yes, because of one brick owner, all these remaining 10 brick owners will be suffering with those penalties. But sir, as we understand, it's a shareholding. I mean, we have a fixed percentage, a fixed shareholding. So why should it affect? Why should it affect if we have to sell? If one has to sell his part of shareholding, why should it affect his ownership? I mean, his No. I was not talking about at the time of exit. I was talking about in context when we are paying the builder for that brick value. Once you have paid everything, you want to sell your brick, then no matter other 10 owners what they want, that is not one brick owner's consent. He can do whatever he wants with that brick value or his brick. Yeah, that's right. If he want to sell it, he can sell it freely. And now Brikiit is not the only platform in India. Like if you will search magicbricks.com these days, so Magic Bricks also have launched their meta version just 5 months back, where you can list your fractional ownership properties on that portal for your selling or reselling also. True, but in this case, I think it will be through the EXP automatically anyway. Yes, true. Sir? Hello? Yeah, Jagdish, can you take the call, please? Jagdish? Yes, please tell me. How much will be the maintenance charges and all? So sir, on an average, we can say that it will come between around 2.5 rupees to 3 rupees per square feet for the maintenance of the society.
Okay. Is there any questions? Or? Anyone having any question? कुछ 7 years का लॉक इन पीरियड शुरू में सुना था, वो ऐसा कुछ कोई चीज है क्या? Hello. इनिशियली जब ये इंट्रो आया था ना, तो 7 year का कुछ सुना था, उसमें कोई is there something like that? So no, we don't have any lock-in period. Lock-in period is that only for that Brikiit would be managing the property, the management part. So Not in Brikiit terms will of only manage for 7 years. Yes, ma'am. So no, we can manage ahead also. After that also, however, it depends. Like if all the brick owners they say no, we don't want your company to manage our property. So in that case, they can take the decision. मोनिका जी, व्हाट हैपेंस, सी 7 साल तक जब भी ब्रिकेट प्रॉपर्टी मैनेज करेगा ना, तो प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि 11 में से 8 ओनर्स हमारी सर्विसेज से खुश ना हो, हालांकि हम ऐसा होने देंगे नहीं, बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो एटलीस्ट दैट एसपीवी, ऑल दीज ब्रिक ओनर्स शुड हैव सम अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर टू कीप ब्रिकेट एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर इन फ्यूचर और नॉट. तो दैट वाज द रीजन हम हर 7 साल में ये जो एग्रीमेंट्स इनका रिन्यू करते जाएंगे. And I don't think for that anyone should have any objection, right? क्योंकि दोनों के लिए win-win situation होना जरूरी है. Yeah, if it's going well, तो और 4 लोग आ जाएंगे करने के लिए, so that's automatic, I guess. Right. So anyone having any question, or should we wind up, and then I'll get back to you with all the creatives and queries जो आज हमने discuss की हैं. I have a small query. Somebody, and he's I mean, he's good in the finance and all. He has a lot of money right now to invest, but he has a query. He was wondering, like, supposing if there's a value appreciation of the shareholding that he has. So supposing in case of any emergency, will he be able to raise finance against his shareholding, like mortgaging or whatever? Will it be possible? Supposing he invests into one brick, maybe multiple bricks, and then suddenly he wants to raise some finance against his shareholding in one or two of the bricks, that he has financed, he has purchased. Yes, Kedia Saab, see what happens. Once you buy a brick, you are already connected with a very big community of like-minded people. जहाँ पर सब लोगों ने कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है, समझा है और बाय किया है. तो सबसे पहला एडवांटेज है, जैसे हम लोग अपने कुछ कामों की वजह से सोसाइटी में अब तक नेटवर्क बना लेते हैं, सेम इज दिस ब्रिक ओनरशिप. तो सबसे पहला, ऑल्दो वी हैव एक्सपीरियंस एग्जांपल लाइक दैट, आई कैन नॉट शेयर, वो थोड़ा सा इमोशनल उसमें टच है, बट यस इट कैन हैपन. फॉर एग्जांपल, मैं, केडिया साहब, जगदीश जी, सदफ, अमित जी, अनुराग जी, हम सब लोग को-ओनर्स हैं, एक ही कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं. अब गॉड फॉरबिड मुझे आज से 4 साल बाद कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ गया कि मेरे को दिखा कि मेरा 10 लाख का ब्रिक वैल्यू है, लेकिन अभी मेरे को इतना कुछ इमरजेंसी है कि मैं 8 लाख में भी बेचने को तैयार हूं. तो ऑलरेडी आई हैव 10 co-owners with me connected through one platform, that is our digital dashboard, जो हमारा वेब एप्लीकेशन है. आई कैन सेंड रिक्वेस्ट टू दीस 10 पीपल कि अभी सर मेरे को ये इमरजेंसी है, एनीवन वांट्स टू हेल्प मी, मैं आपको शेयर होल्डिंग अभी की अभी ट्रांसफर कर देता हूं, आप मेरे को फंड्स ट्रांसफर कर दो. पहला ऑप्शन. Secondly, as of now in India, some NBFCs are there. NBFCs, I guess everyone knows it. NBFCs do this mortgage loaning on fractional properties. However, in India, till date, it is not available to buy a fraction. But after you buy a fractional property in India, you can do that mortgage part, and the finance which is available in India is, I guess, up to 80% of your fractional property value. Okay. Because as I understand from him only,
the normal property mortgage value is up to the range, up to tune of about 70%. So this is a, and he was saying that it should be available because he is into finances. So he said should be available. He just wanted to confirm this. You know, if he can pledge his part of the share and raise some capital, or any customer, any customer. Yeah, see, wo mishappenings do not comes with an alarm or a doorbell. So yes, this is a valid point, and as of now, तो the first tool जो मैंने बताया, we have a community where all the people are very much like-minded. और हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे ब्रिक ओनर को लंग कैंसर डायग्नोज हुआ, पूरे ब्रिक ओनर्स ने मिलकर उनका मदद किया. तो इट वाज अ लाइव एग्जांपल, और हमें भी ये समझ में आया कि how beautifully it can work with the entire community, entire brick owners community. That's true. That's true. Once you get connected to community, well-meaning community, of course, it can help in many manners. Right, sir. Right. So basically, pledge was just your question. था मेरा वो, that I think you've answered that it is possible. Pledge करके. Yes, yes, it is possible. And already we are also having some words with NBFCs. अभी कहना सी NBFCs what they do, वो आपका पहले सिबिल चेक करते हैं, आपका प्रोफेशन प्रोफाइल चेक करते हैं, then they decide very higher rate of interest on your loans. So we are having some words with some good startups, fintech startups, so that we can have a fixed payment plans, fixed ROIs for these kind of loans, and they will provide on the name of Brikiit only. Yeah, very good. That will be great. Right. So we are having some words. कुछ जो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वो फिनटेक में भी पैसा डाला, ब्रिकेट में भी कर रहे हैं, तो all everyone is are on the same platform. So I guess within this quarter or next we will be having some options. Right. Fine. That will be good. Thank you. Anyone having any other question? Out of 100 flats, how many flats were sold under Brikiit? How many were sold directly? So Praveen ji, we do not now Brikiit do not sell any properties as a traditional real estate. That procedure, like we do not sell entire units. We sell only fractional properties on different locations. So if we are talking about particularly in Goa, so at Adora de Goa, as it was a 1 BHK property, we sold 10 units first. Then 10 units at Tata Housing Rio de Goa. It was a 2 BHK ready to move property. Now already we have sold 2 units at Aroha de Goa, as we listed these Aroha de Goa properties just last month only, at the end of the year 2021, in the last week of December. So right now in Goa we have total 22 properties. Then we have some properties in Kasoli. Then we have a beautiful farm resort in Lucknow also. So we are doing it on multiple locations. Okay, so Aroha the Goa project is entirely taken over by Brikiit. Not exactly. If if you have any client who wants to buy an entire unit as an individual owner, then you can directly call him on behalf of EXP. In that manner, Brikiit do not have any interference in these kind of transactions, as we do not deal into traditional real estate now. Okay. Sorry, my question is the entire project is being dealt by Brikiit format or even the regular format as well, regular commercial, traditional format? Both the way, Praveen. Okay. We are doing our own work, like as many property we can acquire. As Jagdish ji has already told you, we have more than 700 properties right now, so we have a big opportunity to sell it on fractions. Plus, for the entire real estate market, you guys also have an opportunity to sell as a whole unit to individual buyers. So we are doing it both the way. Brikiit अपना काम कर रहा है, बाकी real estate का जो industry है, realtors हैं, वो अपना काम कर रहे हैं. Okay, so far under Brikiit, you have sold 700 units, right?
No. 700 units are available for sale at Aroha de Goa or Purvankras project. Okay. Where we have sold till date, we have sold only 12 1 BHK and 2 2 BHK. Okay. So Okay. total 12 properties at this particular project. Okay. Yes. Thank you. Yep. So out of 12 months, and we are 11 brick owners. So let's say all you are using the, utilizing the property for full their stake, 30 days. So what will happen that for the one remaining month, they will be getting, each one will be getting the 11th portion of the month? That's how it will be there? The remaining for the 12th month. Okay. So that 12th month is just a buffer. Sorry, Jagdish, interrupt कर रहा हूँ मैं. No worries, no worries. आप बोलिए. So this 12th month is just a buffer, as these properties are being used now very frequently, like by the brick owners also. If brick owners are not coming, then Brikiit is listing these properties for daily rental business. So when these properties are being used so frequently, then it is possible we have some maintenance work also, sometimes some repair, sometimes some wear and tear. So we have to shut down the property. So this 12 month is just a buffer for that maintenance part. However, whatever is happening at your property, as through your dashboard, through that mobile application, each and every brick owner can monitor his property's performance also. Like, itna simple hai, whether my property is listed today, it is earning rent today or not, or agar nahi kar raha hai to uspe brick owner ruka hai kya, wo vacant to nahi hai, everything you can see through your dashboard sitting at your home only. So whatever will be happen over there, everyone will know. And there are 1900 flats, I suppose, right? Approx 1900 units are there. So, so I think so. Whether these all are holiday homes only or residential flats also? Dilip ji, this entire project has been constructed on a theme of holiday home only. Okay. However, holiday homes can be owned by any means, like the people who are not willing to buy a property worth 50-55 lakh rupees as an individual owner. So they can come to us, they can buy on fractions. If anyone is willing to, spend that much of money on his own to own a particular flat as a holiday home, people can go for that also. However, many of individual owners are also, were getting back to us. Property to le liya hai. Now the challenge is to maintain and manage the properties. Because people are living, in Kolkata, in Mumbai, in Bangalore, Pune, Delhi. So it was a challenge every time for holiday homes. तो हम लोग ऐसा भी टाई अप करते हैं एज अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर कि आप पूरा प्रॉपर्टी मेरे को दे दो, बट वी हैव आवर ओन स्टैंडर्ड्स, ओन एसओपीज. तो वी गिव यू अ एंटायर चेकलिस्ट कि हमको जो फर्निशिंग चाहिए वो ब्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चाहिए. इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, देन वी डू दैट 70-30 earning split. 70% will be the flat owners rentals, or 30% will be Brikiit's commission or Brikiit's that payout to manage your properties. Okay. Thank you. Dilip ji, I hope you got my you got the answer. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Akash, thank you so much. Thank you, Jagdish ji. Thank you so much. और I hope अगर किसी की query है तो please let me know. Yeah, thank you so much, Sadaf. Thank you. Thank you. Okay, so जितनी भी requirements हैं that I'll coordinate tomorrow. And Sure. Okay. Okay, thank you, Mr. Sadaf. Thank you, everyone. Thank you for all. your Thank you, everyone. Thank you, Sadaf. Thank you.